Good morning, students. Today our topic is some basic concept of chemistry. Chapter first, plus one class. In some basic concepts of chemistry, first we will discuss about matter. Anything that occupies space and has mass are called matter. For example, table, chair, water, air, etc. are called matter. Emotions, feelings are not considered in matter. Now, classification of matter. Matter are classified into two types: physical classification and chemical classification. In physical classification, it is based on physical state of the substance. Physical state means solid state, liquid state, and gaseous state of the substance. Now, what is solid? A substance is said to be solid if it possesses definite shape and definite volume. Particles are closely packed. Interparticle space in solid are negligible, and intermolecular forces between the particles are very strong. Those substances which possess these properties are called solid. Now, second is the liquid state. A substance is said to be liquid if it possesses definite volume but not definite shape. For example, water, milk, oil. In liquid, particles are not closely packed. Some space between present in the particles. Intermolecular forces of attraction between the particles is weak than the solid. Next is the gaseous state. A substance is said to be gaseous if it possesses neither definite shape nor definite volumes, and particles are not closely packed. Most of the space between the particles is vacant. For example, oxygen, hydrogen, carbon dioxide gases. Now, next is the chemical classification. In chemical classification, it is based on the composition of the substance. Second is chemical classification of matter. It is based on composition of the substance. On the basis of chemical classification, matter can be classified into two types. First is the pure substance. Pure substance. And second is mixture. Pure substance, a material containing only one substance are called pure substance. Chemical classification, it is based on the composition of the substance. Now, on the basis of the chemical classification, matter can classify into two types. First is the pure substance, second is the mixture. Pure substance means a material that contain only one substance are called
pure substance. And mixture, a material that contain two or more than two substance in any proportion are called mixture. Now, first we will discuss about pure substance. Pure substance are further classified into difference between mixture and compound. In mixture, the constituent of a mixture may be present in any ratio. Means in mixture, two or more substance are present in any ratio, but in compound, the constituent are present in a fixed ratio by mass. Means जो कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, जबकि मिक्सचर के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंस है, वो फिक्स रेशियो में प्रेजेंट नहीं होते. मिक्सचर मे और मे नॉट बी होमोजीनियस इन नेचर. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, जबकि कंपाउंड हमेशा कैसा होगा, होमोजीनियस ही होगा. नाउ constituent of mixture are easily separated by the physical method. जो मिक्सचर जिन सब्सटेंस से बना है, जिन पार्टिकल से बना है, हम उसको इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास हमने एग्जांपल लिया था आयरन, सल्फर और NaCl का कॉमन सॉल्ट का. अगर ये तीनों मिक्स हैं तो हम इसको, इन तीनों को सेपरेशन के लिए सिंपल मैग्नेट यूज कर सकते हैं, जिससे आयरन अलग हो जाएगा. फिर हम इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, तो उसमें से आपके पास कॉमन सॉल्ट अलग कर सकते हैं. मीन्स सम फिजिकल मेथड की हेल्प से हम मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम उसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते. अगर कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग करना है तो हमें कुछ हीट, कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे आपके पास H2O है, तो H2O को सेपरेट आउट करने के लिए उसमें H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी. वो सिंपल फिजिकल मेथड से हम H2O में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट आउट नहीं कर सकते. ना मिक्सचर के अंदर जब भी कोई मिक्सचर बनता है तो हम उसमें क्या देखते हैं, फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जबकि कंपाउंड में हमें क्या देखने को मिलते हैं, केमिकल चेंजेस. मिक्सचर का यूजुअली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, जबकि कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहता है, शार्प रहता है. थैंक यू. Chemical classification of matter. It is based on composition of the substance. On the basis of the chemical classification, matter can be classified into two types. First is the pure substance, second is the mixture. Pure substance means a material that contain only one substance are called pure substance. Mixture means a material that contain more than two or more substance in any proportion is called mixture. Now, pure substance are further classified into elements and compounds. Elements is a pure substance which contain only one kind of particles. These particles are called atom or molecules. Element means एक ऐसे प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं. उन पार्टिकल्स को हम एटम, वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. बट कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स combined together by fixed proportion and which can be decomposed into the constituent elements by the suitable chemical method. Means कि कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, और तो उनसे क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स मीन्स हाइड्रोजन,
carbon, iron, etc. Compound, for example, H2O, CO2. In H2O, hydrogen and oxygen element combine in a fixed ratio. Fixed ratio means 1:8 by mass. कि H2O के अंदर कौन से दो एलिमेंट है? हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है. आपस में कंबाइन किए हैं. इनकी ये जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी. ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या रहेगी? हमेशा 3:8 में कंबाइन करेंगे. तो इनको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स बोलेंगे. नाउ कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज द organic compounds and next is the inorganic compounds. Organic compounds are compounds which are present in plants and animals, and inorganic compound main constituent is कार्बन. हम ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हें कहते हैं जिसके अंदर मेन जो कंस्टिट्यूएंट होता है कार्बन, उसके साथ कुछ अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, बट जो उसके अंदर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? कार्बन होगा. अदर एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन, सल्फर, सम अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे. बट inorganic compounds are those compounds which are obtained from non-living sources such as rocks and materials. कि inorganic compound जो हमें किससे मिलते हैं? नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे रॉक्स हैं या फिर मिनरल्स हैं. जैसे आप हमारे पास एग्जांपल है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का NaCl. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन मेन कंस्टिट्यूएंट नहीं होगा. कार्बन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, कार्बन मेन कंस्टिट्यूएंट में प्रेजेंट नहीं होगा. और एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथेन, एक्सेट्रा. Now, elements. Elements are further classified into metal, non-metals, and metalloids or semi-metals. The metals means those elements which have tendency to lose the electrons are called metals, or metals are shining surface, malleable, ductile, good conductor of electricity. Non-metal means those elements which have tendency to gain the electrons, or non-lustrous, not malleable, ductile. For example of metal is zinc, iron. These are the example of metal. Sodium. Non-metal means chlorine, oxygen, nitrogen. These are non-metals. And metalloids, those elements which have both properties of metal and non-metals are called metalloids. Metalloids, for example, arsenic, antimony, bismuth, etc. are called metalloids. Now, further, matter, anything that occupies space and has mass are called matter. The matter are classified into the two types. First is matter. Anything that occupies space and has mass are called matter, such as table, chair. These are the examples of the matter. The matter are classified into two types. First is the physical classification. Second is the chemical classification. In physical classification, it is based on physical state of the substance. Physical state means solid state, liquid state, or the gaseous state of the substance. Solid, a substance is said to be solid if it possesses definite shape, definite volume.
But in liquid, a substance is said to be possess a definite volume but not a definite shape, and gas neither definite volume nor definite shape. For example, chalk. Chalk is an example of solid, and example of liquid is milk, and example of gas is air. Oxygen, hydrogen is the example of gases. Now in chemical classification, matter are classified into the two types, pure substance and mixture. Pure substance means a material that containing only the one substance are called pure substance, and mixture means a material that contain two or more than two substances in any proportion are called mixture. The pure substances are further classified into elements and compounds. Elements is a pure substance that contain only one kind of the particles. एलिमेंट एक ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी. बट इन अ compound is a pure substance that containing two or more than two elements combined together in a fixed proportion by mass. कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में हमेशा कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशो के अंदर. तो उस दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं. नाउ एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल्स and metalloids. Metal means those elements which have tendency to lose the electrons are called metal, or those element has lustrous, malleable, ductile, good conductor of electricity are called metals. Non-metal means those elements which have tendency to gain the electron are called non-metals, and non-lustrous and bad conductor of electricity and not malleable, not ductile, those elements are called non-metals. And metalloids, those elements which possess both the properties of the metals and non-metals are called metalloids. For example, arsenic, antimony, bismuth, etc. are the example of the metalloids. Metals, for example, gold, silver, iron, etc. These are the examples of the metal. Non-metal means oxygen, chlorine, nitrogen, etc. is an example of non-metals. Now we will discuss about the mixture. Mixture is material that contain more than two or more than two substances in any ratio is called mixture, and the property of the mixture are the property of its constituent. Means mixture में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस अगर किसी भी रेशो में प्रेजेंट होते हैं, किसी भी रेशो में आपस में मिक्स करेंगे तो उससे क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा. और जो उन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होगी वही किसकी प्रॉपर्टी होगी, मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी. Now mixture is classified into two types, homogeneous and heterogeneous. What is meaning of homo means same. A mixture is said to be homogeneous if its composition is uniform throughout. कि एक homogeneous mixture क्या होगा, जिसके अंदर क्या होगी, composition क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का. से एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सम नोबल गैसेस प्रेजेंट होती है, बट वो अलग अलग नहीं दिखाई देती, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म कंपोजिशन में एक दूसरे में मिक्स होती हैं. तो एयर हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर. नाउ हेट्रोजीनियस.
Heterogeneous means a mixture is said to be heterogeneous, but hetero means different. A mixture is said to be heterogeneous if its composition is not uniform throughout. ये एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर आपके अलग अलग कंपोनेंट हम नेक डाई से देख सकते हैं, जैसे आपके पास है मिक्सचर ऑफ आयरन, सल्फर एंड कॉमन सॉल्ट. This is the example of the heterogeneous mixture.